भाई देखो हर जगह इज्जत चीज़ होती नहीं, तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ मुझे थोड़ी चलेगा। मैं लिख रहा है मुझे, तुम जाते हैं एमिटी में एडमिशन टेस्ट में हमेशा दिखते रहा। भाई एमिटी क्यों तोड़ी तूने? वो तो दिखता तेरे को। Hey guys, so welcome back to our next vlog. So today I'm going again with Parinday, and this time I'm going to Oxford and Cambridge. But this time with me there's one more handsome guy, hot, dashing, Astitva. आज हमारे साथ ये जा रहे हैं भाई, और मैं ये काटूंगा नहीं भाई, ये याद रखियो पॉइंट। तो भाई हम स्टार्ट हो चुकी है, मोहम्मद भाई देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कौन है कौन नहीं है, एंड देखते हैं। एंड आउटफिट की बात करें तो भाई आज हमने पहने ये, और चलते हैं देखते हैं कैसा जाता है कैसा नहीं जाता। लास्ट ट्रिप वाज सो ऑसम, दिस टाइम लेट्स फाइंड आउट कैसा जा रहा है। क्या बोल रहे थे आप? सही बात है, करना भी चाहिए, पता है नहीं वो हरामी था तो इसीलिए तो वो चला गया। Hello. अच्छे लोगों को छोड़ के चला जाता है वो, मतलब सॉरी आप तो बुरे थे। मैं तो हरामी थी। वो तो सही बात है। एंड ही स्मेल्स लाइक योर नेक्स्ट, go smell him. Guys, I welcome you all to Parinday. एक बार आप सबके लिए तालियां। हमारे 5 लोग आज नहीं आए, I don't know पैसे देके क्यों नहीं आते लोग, मुझे समझ नहीं आती। ज्यादा पैसे लोगों के पास तो 5 लोग जो मैसेज आया नहीं आ रहे। मैंने कहा वाओ ठीक है यार, हम लोग खुले होके बैठ जाएंगे। तो हमारे पास थोड़ी सीट खाली है, किसी ने कोई इधर उधर होना हो तो आगे भी 2 सीट्स हैं और पीछे भी हैं, तो किसी ने अगर आगे पीछे होना तो इट्स फाइन। और सबसे पहले द पावर हाउस, परिंदे पावर हाउस, हमारी टीम जिसकी वजह से ये ट्रिप ऑफ कोर्स हमेशा सक्सेसफुल होता है। इट्स नॉट ओनली मी ऑफ कोर्स, इट्स माय टीम हु इज वर्किंग हार्ड बिहाइंड द सीन एंड ऑन द ट्रिप एज वेल। सबसे पहले मोहम्मद, लीड आर्टिस्ट, रिचुअल ऑफ कोर्स वी मिस्ड यू लास्ट ट्रिप, रिचुअल यार, रिचुअल द पॉइंट। इनकी आप आवाज सुनेंगे तो आप लोगों को मजा आएगा। और हमारा मेन गाय सचिन ऑफ कोर्स। भाई पहले तो ऐसे नहीं किया आपने कभी। क्या बात कर रहे हो? आज स्पेशल क्या है? गिव इट अप फॉर ज़ेरा। हमारा फाउंडर वॉइस नोट सुना होगा, सचिन भाई का वॉइस नोट था। नीली खराब हो गई भाई। आप लोग थ्रू आउट द ट्रिप देखेंगे। मैसेज कर रहा था ना गाड़ी चलाते चलाते क्या बाकी एक दफा एक और बंदे का नाम इस दफा बनता है, हर्षित यार ऑफ कोर्स। थैंक यू गाइस। आई थिंक थर्ड फोर्थ ट्रिप, फिफ्थ ट्रिप। ये बॉय आता है, व्लॉग भी बनाता है, तो आप लोग व्लॉग्स भी जरूर देखें, फॉलो भी करें बॉय को। हाय गाइस। और हाँ मैं सुन रहा हूँ। अगला करेगा 6 हो जाएंगे, तो अभी तो 5 पे टिकने दो ना आपके वाले नंबर पे। बाकी हमारे ये जो एक थोड़ा लेक्चर में देता हूँ हमेशा से, कुछ लोगों को तो याद हो गया होगा, खुद आप लोगों ने जाना है अगर हमारे साथ रहना है। सब टू यू। 1 बजे हम लोग पंटिंग करेंगे। अभी हम लोग लिस्ट में देखते हैं किस किस ने पंटिंग करनी है। 1 to 1:30 और 1:40 हम लोग पंटिंग करेंगे। उसके बाद 2 बजे हम निकलेंगे। 2 घंटे का रास्ता ऑक्सफोर्ड का है, और ऑक्सफोर्ड के बाद ऑक्सफोर्ड हम लोग आपको 2.5 आवर्स देंगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा देखने का नहीं है। 3-4 जगहें हैं वो जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ऐसे सही बता रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड में कुछ भी नहीं है, सो बोरिंग प्लेस, इसीलिए अपने कैमरे में ज़्यादा टाइम दिए। हम लोग गए भाई ऑक्सफोर्ड को हम बोरिंग नहीं होने देंगे, वहाँ भी हम एंजॉय कर लेंगे। क्या बात है, ये हमारे आर्टिस्ट हैं। बाकी हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़े से इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन मैं खुद करता हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम हमारे बड़ा कम होता है। हमारा स्कॉटलैंड का ट्रिप आ रहा है, उसमें ऑफ कोर्स वी आर वेरी एक्साइटेड, द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्कॉटलैंड ऑन a 3 days ट्रिप। एंड हमारा पावर हाउस उसमें होगा। इसमें से मेरे ख्याल से किसने टिकट, यहाँ पे कोई है निशी जाएंगे राइट, इन्होंने टिकट ले भी ली। आ गया। So guys, we are finally reached to Cambridge and right now we are going for a group photo, क्योंकि वो ले लेते हैं। और यहाँ पे आप देख लो, आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल दैट है कमिंग। सो वो चीज़ें बहुत सारे ग्रुप आ रखे हैं अलग अलग। आई थिंक बहुत सारी ट्रिप्स आती हैं यहाँ पे, बिकॉज दिस इज़ अ प्लेस वेयर एवरीवन वांट्स टू कम एंड यू नो लुक अराउंड क्या है कैम्ब्रिज इज़ ऑल अबाउट। एंड हमारे क्या हो गया अस्तित्व, बहुत एंजॉय हो रहा है भाई। तुम्हें अंताक्षरी कैसा लगा? मतलब मेरी प्लेलिस्ट इंप्रूव हो चुकी है भाई। तो भाई कर लेते हैं ग्रुप फोटो। अगर आप लोग चाहते हैं मैं दोबारा इसके व्लॉग में हूँ तो उसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और देनी पड़ेंगे 70 पाउंड, क्योंकि मैं Look who's speaking. Hello. हेलो। सो गाइस अभी हम जा रहे ये हैं। आत्मा है, आत्मा। Hi. ये वही है, अगर आपको याद हो रील याद आई आपको कुछ? गिरेलो। हाँ
ये वही है जो एक बार में जज्बात बदल गए थे, कंट्री बदल गई थी। जज्बात बदल गए थे, हालात बदल गए थे उस टाइम। 100 पे कितने थे? 7 आउट। कौन से मैच की बात हो रही है? ये ऐसा होता है, याद नहीं रहता आपको। ओहो, short term memory, busy people ना। Yeah, oh my god. Oh my So God, busy can't people. remember these type of things. Yeah. ऐसे लोग भी भूल जाते हैं कि आपको उनकी भी शॉर्ट मेमोरी होती हो? Yes, लोग भी भूल जाते हैं मुझे। ये तो बहुत ही अच्छा करते हैं, याददाश्त उनकी अच्छी हो जाती होगी फिर। यहाँ पे हमारी पंटिंग की बातें हो रही हैं। Around 50. 50, okay. That should be doable. We've got enough tour guides in today. Are you, So we will come here around 1 p.m. yeah, okay. So with that, you would need to pre-book, I think. Yeah, of course, I will do that. So are you wanting to book on now? Yeah, that's all good. So obviously, so that would, I mean, 50 people, so probably 5 privates is your best bet. Any children? तो गाइस अभी हम जा रहे हैं पंटिंग बुक करने जो 1 बजे होने वाली है। सो वी आर प्री बुकिंग राइट नाउ एंड दीस आर द पीपल हु डू इट एंड वी नीड टू डू द प्री बुकिंग राइट नाउ। सो दैट्स द थिंग। सो मी एंड ज़ीन आर गोइंग देयर। सब तो हम लोग इसमें बैठ के जाएंगे। समवेयर अराउंड वी आर 50 पीपल एंड वी गोना डू दिस। ये बहुत ही फेमस है यार गाइस यहाँ पे लंदन में, सॉरी कैम्ब्रिज में, दैट पीपल कम हियर गो फॉर पंटिंग एंड दैट्स। तो गाइस अभी हमारी बुकिंग हो चुकी है पंटिंग की एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू रोम अराउंड। लेट्स सी क्या है यहाँ पे, एक्सप्लोर करते हैं एंड उसके बाद हमें 1 बजे यहाँ पे आना है पंटिंग के लिए। दीज आर सम ऑफ द कॉलेजेस हियर एंड लुक एट द पीपल। सो यहाँ पे बेसिकली कॉलेज है, यहाँ पे आपको एक टूर गाइड ऐसे मिल जाएंगे छोटे छोटे, आप यहाँ से बुक कर सकते हो। दे विल गिव यू 6-7 पॉइंट्स एंड यू कैन गो एंड टेक अ गाइड, बुक अ गाइड एंड टेक अ टूर ऑफ दैट एंड विल कम यू नो गोना कंप्लीट। लो हम आ गए हमारे हमेशा सचिन भाई आज कैम्ब्रिज, यहाँ से जाएंगे ऑक्सफोर्ड। भाई हमारे साथ हैं। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, डू व्हाटएवर यू लाइक। यार इतना अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू भाई। Yes, and bye. ये देखो हमारे जैन भाई भी आ गए। देखो गाइस। देखो या यू कैन सब देख सकते हो यहाँ पे लोग playing guitars on the street. There are some cafes here. इधर मैं चर्च के अंदर, ये अस्तित्व भाई का प्लान था कि भाई चर्च घूमेंगे। 7.5 पाउंड की टिकट, क्लॉक रूम वॉइड। अरे भाई ये कहाँ एफिल टावर चढ़ा दिया हमें तुम्हें। भाई ये सीढ़ी का क्या है बहन भाई, क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे 7.5 पाउंड लेके आए हैं फालतू में। भाई देखो हर जगह इज्जत चीज़ होती नहीं, तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ मुझे थोड़ी चलेगा? मैं लिख रहा था मुझे तुम जाते हैं एमडी में लेते एडमिशन टेस्ट ऑफ में हमेशा दिखते रहा। भाई एमटी क्यों तोड़ी तूने? वो तो दिखता तेरे को। भाई 360 व्यू देखो आप यहाँ से। भाई ये है कैम्ब्रिज का चर्च, basically the University of Church Cambridge. It's called Great Saint Mary and ऊपर से कुछ नहीं है, that's just a viewpoint. You can take a 360 look of the whole Cambridge here from here. That's the thing. आप यहाँ पे रुक सकते हो जितना रुकना है आपको, कोई वो रोक टोक नहीं है आपको इसके लिए। तेरे बाल सही करने के लिए मैं ब्लॉगिंग नहीं करता हूँ, ये तेरे लुक के लिए। आप लोग चाहते हैं भाई और मैं इसके ब्लॉग में दोबारा हैं तो आप ज़्यादा नहीं बस 150 पाउंड देते हैं, जिससे कि इनकी भी टिकट हो जाए अगली बार टिकट। बस यही चाहिए था। ठीक है, अच्छा व्यू है बट 7 पाउंड दे के पैसे वेस्ट ही हैं, तो अगर आना है तो आ सकते हो। आपकी टिप्पणी इस पे 7 पाउंड वेस्ट हो गए हैं। 7.5 देखो वही वाली बात है, जहाँ 20 पाउंड लगे तो वहाँ 2-3 और लगे तो फर्क पड़ता नहीं है। और पैसा यहाँ यार यही सब, अब वही वाली बात एंड ऑफ द डे यही सब चीज़ें हैं देखने के लिए, और क्या है। पर अगर आप पुरानी बिल्डिंग्स हिस्ट्री देखना चाहते हो तो या आपके लिए वर्थ नहीं लाइक पसंद है तो बढ़िया ये सब चीज़ें। और क्या अब यहाँ पे तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें वो चाहिए रिसेंटली में अवार्ड्स चाहिए देखने के लिए, तुम्हें शाहरुख खान चाहिए नाचते हुआ? यहाँ पे आके कुछ वो तो बनने नहीं वाला। लाइक मैं पहले आ चुकी हूँ तो इसलिए आर्ट अच्छा है, बढ़िया। आओ, कैम्ब्रिज इज नाइस, मस्ट विजिट। ओके गाइस, ये हमारा चर्च ऊपर था भाई, दिखा नहीं मेरे को, बंद कर दिया आई थिंक दरवाजा उन्होंने। ये है कैम्ब्रिज का चर्च गाइस। यहाँ पे सिर्फ आर्किटेक्चर और हेरिटेज ही देखने आ सकते हो अगर आपको आना है यहाँ पे तो। So guys, this is the map for the Cambridge. Yeah, that's not that. भाई यहाँ पे पता है हर चीज़ की एंट्री है,
आप बिना टिकट के ना एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते हो यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे ना आप छोटे छोटे शॉप्स आपको दिख जाएंगे जो टिकट्स बेच रहे हैं, आपको रोड पे ही दिख जाएंगे जब आप कैम्ब्रिज के अंदर एंटर करोगे। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 32 पाउंड्स में आपको कुछ 8 से 10 स्पॉट्स हैं जो प्रॉपर कैम्ब्रिज आपको घुमाएंगे। लाइक किंग्स कॉलेज हो गया, सेंट जॉन्स हो गया, अ लॉट ऑफ अदर थिंग, कैथेड्रल हो गया, चर्च जो इनसाइड है, आप वहाँ पे लंच भी कर सकते हो। सो वो चीज़ है। बिना उसके, अब जैसे हम यहाँ पे आए, देखो पीछे टिकट चेक हो रही है हर जगह, तो बिना टिकट के तो कोई एंट्री है ही नहीं, आप अंदर कहीं जा ही नहीं सकते हो। तो यू नीड दैट टिकट टू गो इनसाइड, दैट्स द मेन थिंग। तो भाई अगर आप आ रहे हो टिकट लो। बाकी अभी हमारी 1 बजे पंटिंग है, उस पर देखते हैं कितना घूमने को मिलता है, क्या है, जो कि हमने पे किया है 14.5 पाउंड्स फॉर दैट। So guys, we are starting punting. Excellent, me too. I'm joking, I've done this before. You know what I was praying? I was praying that there should be no girl who should be riding the boat. No girl. Why? And now you said, I don't trust them. You don't trust them? Well, fine, I'm a male, don't worry. I'm Charlie, nice to meet you. Nice to meet you. Hi. So a quick safety announcement before we get going. Just keep your hands and fingers inside for me and stay seated, okay? Otherwise, relax. This is a 45-minute tour up and down the River Cam. Beautiful scenery, take as many photographs as you like, and please feel free to ask me any questions. Okay. And I have one question for you. Where are you from? Different countries. Yeah. India and Pakistan? Yeah. Fantastic. How do you guys know each other? There is, yeah. So if you look at this bridge, it's not attached to the sides, it's just resting on the stone. And every single piece of wood on the bridge is straight, even though it looks curved. So if you imagine holding a matchstick in your hand, right, very easy to snap it in the middle. If you put your thumb and your finger in either end and squeeze, the match won't break, and that's what's happening to the bridge. So the compression is holding it there, and as long as the wood isn't bending, it's very strong. And it's been there for 120 years. It's made out of teak. Yeah. As part of Queen's College, so there's 8 colleges on our tour today. The colleges are all part of Cambridge University. You know Harry Potter, right? Yeah. Okay, imagine the university is Hogwarts. The colleges are like the houses, like Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff. They aren't schools, they are where you live, socialise and study. And they don't specialize. When the university was founded, it was all controlled by the Catholic Church, by the Pope. And people believed starting a college would get them into heaven because they were paying money to the church. Yeah. Absolutely no idea if that worked. But let's say for their sake that it did. So yeah, the colleges were started by kings, by queens, by ladies and lords. Yeah. The area is known as Silicon Fen. Not me. Cambridge Not is at all. like the Silicon Valley of the UK. Yeah. So we are in Queen's College right now, guys. Queen's College. So the university itself was founded in 1209, and that makes it the second oldest in England. In England? Yeah, so you can probably guess the name of the oldest. If it's not Cambridge, it will be Oxford. Oxford, yeah. You can say that word. You can say it. You can say it. It's fine. Cambridge is much better, though, of course. Certainly unbiased. Yeah. She's fan ke. Cambridge has 126 Nobel Prizes. Oxford has 73. So Cambridge has a lead of more than 50. Tell me one most unique thing about this place. About Cambridge University. About Cambridge, yes. 2 seconds, sorry. 2 seconds. Hold on, is this That's over. the unique thing about Cambridge University, okay? So the colleges are made up of students and fellows. Okay. So fellows are academics who are also senior college members. As a general rule, fellows are the only people allowed to walk on the grass inside the colleges. So there's grass on my left, no students, fellows. Really? Yes, you have a very strict hierarchy in the college. You have students at the bottom, then the fellows, then the master or the president on the top. Yeah. So if I was a fellow, I'd be doing that all day just to show off. You know? So this is now King's College. This is the most famous college of all. And on my right hand side here, this is King's College Chapel. This is what you see in all the postcards, the fridge magnets and the films.
Oppenheimer, right? On a busy day, I will see this building 12 times. But I'm not complaining, I like this office. And you burn so many calories doing this job, you can eat anything. I once had 4 ice creams after work. Didn't touch me. This college was founded and named after the English King Henry VI in 1441. So the college is nearly 600 years old. Next question. Yes. Going on, the bridge of size. I didn't know Cambridge students are naughty. Yeah. You see on the chapel, you see on the spires of the chapel, there are spikes. Sorry, I think I should. So have a look at the spires on the chapel. Yeah, There are spikes. Can you see them? They're about a quarter of the way down. White spikes. Yes. Tied around. Yeah. They are to stop students climbing to the top. Oh. Because they like to do that. They leave objects at the top like traffic cones and umbrellas. Yeah. So the students, they are known for climbing buildings and doing pranks like that. Yeah. Clare College. Now this college is exactly 700 years old. Yeah. And the founder was called Lady Elizabeth de Clare. She was interesting, okay? 3 of her husbands died, all within 1 year of marrying her. By the time she was 26 years old. And all of her husbands were very rich. Wow. How did they die? We don't know. But she was very rich. Number 3 died. That's called gold digger, bro. I think we know. I would be very nervous if she cooked me a meal. And then when she founded the college, she paid the members inside to pray for her soul every week for the rest of time. Oh. And in her case, it does sound necessary, doesn't it? Don't know about India or Pakistan, but where I'm from, 3 husbands going missing in the 20s is suspicious. Where are you from? Cambridge, born and bred. Born in the city. So we're now coming into Trinity College. So Trinity is the wealthiest college, but legally speaking, the college is a charity, so they have to... Love the history. Why is And this college, Trinity, has a net worth of 2.4 billion. Which is like 2 Taylor Swifts, right? That's a lot of money there. How does their taxes work? They don't pay tax. Prank किया था. Clever, huh? Well, they don't pay VAT, which is value-added tax. Yeah, they don't pay that. So. Nobody could find out. वो देखो फोटोग्राफर अपनी फोटो खींच The council tax, high. So this is the second most expensive city to live in after London. Wow. Second. हम लंदन में. And this college was founded by a very famous English king. He was called Henry VIII. Do you know Henry? Yeah, he had 6 wives. 6 wives in 12 years. Divorced, beheaded, died. Divorced, beheaded, survived. Yeah. Do you know what he did to divorce his first wife? He had to do something. Do you know? Yeah, he started the Church of England because the Pope wouldn't let him. Yeah. So in the West, it's very unusual for a country to have a state religion, but we do for that reason, yeah. And he founded Trinity to turn the university from Catholic to Church of England. The college of lots of money he had stolen from Catholic monasteries. So he dissolved all the Catholic monasteries in England and kept the money for himself, then gave some to Trinity, which is why it's so rich now, yeah. Who? Our richest college. Henry VIII. Oh, yeah, him. He was also, when he died, he was a very large man. Watch your head, the camera, watch your head. Okay. At his funeral, his coffin exploded. Yeah. This was Trinity was Isaac Newton's college. He was here. That apple tree is a clone of the original. So the original one is 100 miles away at his family home, but we have a clone. Yeah.
So lots of Newton's belongings are kept in this library over here on my right. This is the Wren Library. So our guests on the boat from India. You've probably heard of the mathematician Ramanujan. Yeah. So Ramanujan's lost notebook is in this library over here. So it was found there about 50 years after he died. So he had lots of theory in his book which he hadn't proven. When mathematicians found his notebook, they proved every single one. Yeah. So he was like, for those who don't know Ramanujan, like a human calculator. Came up with a formula for partitions. Yeah. Also a very famous Pakistani poet, went to Trinity College. Is it Muhammad Iqbal? Is that his name? Yeah, he was at Trinity College, and they celebrate his birthday here every year as well. And also from India, the first Prime Minister, Nehru. Yeah, Jawaharlal Nehru. Right, yeah, he was at Trinity College as well. He was first Prime Minister. Yes, of the independent India. Yeah. Sorry, all of these went to Trinity. Yeah. And then coming up on my left here, this is St. John's College. St. John's and Trinity, they don't like each other. Okay, this is Gryffindor and Slytherin. Yeah. You decide. The Trinity College students, they have a song that goes, "I would rather be at Oxford than St. John's." Hello, guys. So, St. John's College was founded by a Catholic bishop called John Fisher. Now, John Fisher, he had a thing or two to say to Henry VIII when he founded the Church of England, and Henry had him executed. So John Fisher found the church. Yeah, so I would say Trinity is Slytherin, St. John's a Gryffindor, but these are the two richest colleges as well, so big rivalry. So everyone thinks that King's is the big one. It's not, it's these two, St. John's and Trinity. So it's all before King James I or after? From St. John's. Sorry, what was it? Is it all before King James I or after? Before King James, yeah. Sorry, sir, at the front? Yeah, I was just going to say Trinity got the finances. How did they get St. John's, it was the co-founder of St. John's was Henry VIII's grandmother, Lady Margaret Beaufort. She died 2 years before the college was finished, and John Fisher, he used her money to found this college. And that also annoyed Henry because he was due to inherit that money. His father had already died. So he did two things to annoy Henry, yeah. So basically they both inherited royal estates, yeah. So St. John's is worth about half that of Trinity, about £1 billion. That's the second richest. So Trinity is by far the richest. And this building on my left is student accommodation. अभी जब मैं बोलूँगा तब खड़े हो जाना. So the first, मुझे swimming for survival आती है. Nobel Prize winner went to St. John's. Abdul Salam. And from India, the first Sikh Prime Minister, Manmohan Singh. Yeah, he was at St. John's as well. Yeah. This is the bridge where they hung. Yes, this is the bridge. The Bridge of Sighs. Yeah. लटका दिया था. Yeah, so it was the same model as the master's car, and the master thought it was his car. एक तो ये आज मैं का मेरे मुंह में बाल आ गया. मैं कहूँ ये क्या जाला कहाँ से आया? I am sorry for my hair. I'm sorry. Pink food रे चढ़ रही है मेरी गलती है. ये तुम्हारी गलती है. और फिर तुम्हें बाल डाल दिया. लटकाया कैसे? मुझे तो वही समझ नहीं आ रहा है. उस ब्रिज में. इस ब्रिज पे. इस ब्रिज में. घूम जाए भाई, घूम तो भाई ये वो ब्रिज है जहाँ पे यार बड़ा. Warmer in the winter. So that building, back in 1967, it cost £1 million to construct, which is about £50 million adjusted for inflation. Yeah. So the material is the whole building till there, or just this one? This one. Coming into the oldest part of Cambridge. Oldest, yeah. So the city is about 2,000 years old. The ancient Britons were here, but the first settlement was built by the Romans. So when the Romans left Britain, they were replaced by the Anglo-Saxons. So these were mercenaries from Germany
England means angle land. And then we had some pirates from Scandinavia, the Vikings. So they sailed down the river. They built the port where we're going to turn around in a second. And the last people to conquer England were the Normans from France in 1066. And they all came here because the only hill in the city is just around the corner. Otherwise, Cambridge is built. अरे तुम गाँव में तो सही वीडियो बनाने के लिए Have these boats. They were the floods. Sorry, yes, that's why we have cyclists, yeah. Make sure you look both ways before crossing the road, yeah. They are silent assassins, yeah. Oxford would have more cyclists. I know Cambridge has the highest number of commuters by bike, so the highest percentage. So about 25%. I can do it in half an hour. And if you drive, you have to park and then walk, so it's quicker by bike sometimes. Yeah. I think Oxford is quite as flat as Cambridge. It's also bigger. Cambridge is more compact, so it's easy to get everywhere by bike. Yeah. भाई This here, guys, is the Cam Bridge. बहुत खामोश है भाई तू River थोड़ा Cam बोल Bridge, this one. थोड़ा बोल The Cam Bridge. So the first bridge was built here over 1,000 years ago by the Anglo-Saxons. So their one was wooden, it's gone, but on this location, yeah. And we are turning around here. We have Magdalen College on my left, and on my right, this is the old port, quayside. And that is a swim. अरे ये बच्चे देखो वो बेटा पकड़ भी लेता है पीछे भी तुझे मोटर लगा उसके स्पीड को भी कैसे मोटर So finally we have reached to Oxford. This is Oxford. This is the main, chalk circle you can say of Oxford. So this side, if you'll go straight side, then you'll find a good shopping areas and all that. This side you'll find a museum and architecture and all that. So that's the thing. We're gonna first explore the museum and everything, and then we're gonna go for some shopping if time permits. Let's see. Guys, ये है museum. Yeah. Let's go. तो guys हम म्यूजियम में एंट्री नहीं कर सकते हैं बिकॉज लास्ट एंट्री बंद हो चुकी है विच वॉज अ फ्री एंट्री. हमारा लक ही ख़राब है और क्या ही बोले यार. साला जहाँ जाओ कुछ मिल ही नहीं रहा है घूमने को. मतलब कभी कुछ एंट्री टिकट है फलाना ढिमकाना. So Oxford honestly feels like a fairy tale city. Everywhere you look there is a history, a stunning architecture and that classic old English charm. The whole city has this academic, peaceful and very timeless vibe, which is why so many visitors come here every year. So basically I started with some places. So one of the first place um I visited is like the market and all that, because it was on the way. So that's the thing. But we were also planning to go to some college to see if that's open so we can explore that college, but somehow every college was closed because of the timing, because we reached somewhere around 5 o'clock 6 o'clock. So this was one of the
library area, which is one of the oldest library in Europe and a huge part of Oxford academic history. Even if you are not a student, just walking around these buildings make you feel like you have stopped into a different century. And then behind that there's a church that's called Christ Church College, which is one of the Oxford's most visited college and is also known as for being used in Harry Potter filming scenes. It is one of the those places that Oxford feels extra, magical. And then some amazing colleges like McDonald colleges and Balliol colleges, which we didn't get a chance. And this is what you're looking right now is Radcliffe Square, which is one of the most iconic spot in Oxford. It is surrounded by famous universities building, and the right in the center is the Radcliffe Camera, a beautiful dome shaped building built between 1937 to 1737 to 1749. It was originally a library and now one of the most photographed landmark in the city. So yeah, this was all about the Oxford. There are no such more places to go, but yeah, this is for the blog this time. If you like the video, please do like, share, and subscribe. मिलते हैं आपको next vlog में जल्दी. तब तक के लिए bye bye. See you guys.